Hi everyone, Roshan this side. So we will be doing the market analysis for Bank Nifty and Nifty 50. So let's start. So for Nifty 50, whatever we had the plan, it completely failed. क्या था हमारा प्लान कि अगर मार्केट ये लेवल पे आता है या फिर यहाँ पे, बट इट वाज अ 4 डे हॉलीडे. तो 4 दिन का हॉलीडे था, तो ऑब्वियसली बात है द ग्लोबल मार्केट वाज ओपन एंड दैट विल बी डूइंग इट्स वर्क, राइट. उसकी वजह से वी कैन से कि हाँ दीज गैप डाउन्स वेर एक्सपेक्टेड कि हाँ होगा मार्केट में गैप डाउन, ठीक है. Now let's understand कि how can we take up the trade, how we could have gone for it. Simple thing is that obviously when the market particularly broke this level, tried to went upside, so यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा option buying and छोटा सा option selling करके you could have made, or the proper way it was कि hedging only could have give the money, short straddle or short strangle could have given the money. But again, if you see when we could have gone for the trade is at this point of time when the market was here 7186 से जा सकते थे एंड टारगेट यहां तक रखते हैं, ठीक है. यहां तक चांसेस होते कि हाँ मार्केट आ सकता था, बट क्योंकि हर बार यहां तक आया है, इट हैज कम डाउन टिल हियर, बट मार्केट पर्टिकुलरली रिवर्स फ्रॉम 17000 एज वेल, क्योंकि 17070 के आसपास से रिवर्स कर गया. सो हाउ लेट्स से दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर मिसिंग इट आउट, ठीक है. यहाँ पे I was not, let's say you're not having a proper conviction, market went any point of time you had not proper conviction, then when we could have gone for the trade, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है. अब इसका ब्रेकआउट आ गया, कंफर्मेशन हो गया कि हाँ दिस इज द पॉइंट. सो हियर इफ वी स्विच ऑन द EMAs एंड एवरीथिंग एंड पिवट्स, तो खैर इट विल नॉट बी गोइंग अहेड. पिवट्स हमारा तो इसमें आएगा भी नहीं क्योंकि S3 को कभी का ही क्रॉस कर दिया था. तो इफ यू सी आल्सो विद द हेल्प ऑफ EMA, ठीक है, और not even just the price action also, we could have gone for the trade at this point of time. टारगेट हम लोग कुछ रखते, यहाँ पे ट्रेड रखते तो हमारा स्टॉप लॉस जो होता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉप लॉस रखते. टारगेट हम लोग वी कुड हैव केप्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते. मार्केट वाज गोइंग गुड इनफ, ठीक है. कब तक सही गया? यहाँ तक सही गया जब व्हेन इट स्टार्टेड रिवर्टिंग एज सुन एज दिस लेवल वाज ब्रोकन. ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ दैट वाज इंडिकेशन कि नहीं अब मार्केट यहाँ से हो सकता है रिवर्ट करे, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. इट ब्रोक द रीसेंट लो एंड स्टार्टेड रिवर्टिंग. तो यहाँ पे हमें कॉस्ट टू कॉस्ट में भी वी हैड टू एग्जिट. एंड इन ऑप्शन ट्रेडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू आर डूइंग ऑप्शन बाइंग, यू नीड टू बुक द प्रॉफिट as soon as you are reaching to the target 1, target 2, target 3. Here we are looking for 1:3. So almost it gave us approximately 1:2 it had given us, ठीक है. फिर इसके बाद it started reversing. So one more trade could have been formed at this price, this point of time, long position. Here we could have gone for it and stop loss at this point of time. Target, this is the level because market had started reversing from here. So I would have avoided this trade. क्यों? अगर option hedge करके if I had to adjust, I could have gone for it. But यहाँ पे मैं avoid करता क्योंकि अगर मेरे लिए बड़ा टारगेट नहीं फॉर्म हो रहा है तो I will not be going for it. So this was the overall story of today's bank Nifty 50 trades, ठीक है. Particularly I had gone for the hedging and slightly adjustment I had gone, ठीक है, and then it was a bank Nifty trade. So it was completely messed up because bank Nifty ने उतना अच्छा movement नहीं दिया when it is compared to Nifty 50. Now let's do the analysis for tomorrow. So right now if you see it is forming, ठीक है, head and inverted head and shoulder pattern, ठीक है. तो it is making a good thing कि हाँ अभी we can go for the trade. So we have to mark today's high, ठीक है. आज का high mark करना होगा. So when can we go for the buy side, मतलब uptrend market? If market is crossing this level, we can expect a buying upside movement, ठीक है. एक तो ब्रेकआउट आ जाएगा प्लस दिस लेवल विल बी क्रॉस, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ बाइंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है. सेकंड, इन ए केस इफ दिस ट्रेंड इज ब्रोकन, ठीक है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन एक्सपेक्ट अ सेलिंग मूवमेंट अप टू दिस लेवल. अगर इस बार आता है एंड दिस लेवल इज क्रॉस्ड 17143 के नीचे मिलता है, पहला अपना टारगेट रहेगा निकलने के लिए यहाँ पे, सेकंड will be here. So these will be one buying opportunity and one selling opportunity. Apart from this, market is opening with a gap down or gap up. At that point of time, what can we do? Let's say if it is opening with a gap up, so a smaller pullback we can go for the trade. Let's say market is opening at this point of time
थोड़ा सा नीचे आएगा and वापस if it starts going upside, that's just the way it happened today. Gap down हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर we could have gone for it, right? In the same way, if it is happening with gap up, we can go like that. ठीक है. Apart from this, again, if from here also, if we are getting reversal, we can look for buying side. ठीक है. Because if we see, this is a good resistance point where market can revert, क्योंकि एक अच्छा support level है जहां से मार्केट हो सकता है रिवर्ट कर सके. ठीक है. So that will be the reason we will be expecting कि हाँ, but only with the trend breakout. ये जब ट्रेंड ब्रेकआउट होगा तभी हमें जाना है, और else we will not be going for it. ठीक है. तो ये हमारा हो जाएगा. Then for selling side के लिए, in a case if market is opening with a gap up, so unnecessarily we will not be going for the selling side until unless we are not getting, because I am not seeing anything in between for selling side. Only if it is coming at this point of time, then we can get selling के लिए. In between, if market is reverting, अगर market गलती से भी gap up open होता है, if it is opening with a gap up, ठीक है, if it is crossing this level, today's high, chances will be high to touch this level once again, because this is a huge gap which has made. But again, we do not know what can happen tomorrow. ठीक है, तो we have to work on all the possibilities कि हाँ, अब ये level break हुआ, we can expect the market to go till this point of time and we can go for it. So this was your Nifty. And talking about Bank Nifty, ठीक है, अब Bank Nifty का if you'll see, ठीक है, तो Bank Nifty was in this good range at initially, ठीक है, फिर उसके बाद ये एक थोड़ा सा मूवमेंट दिया. तो अब हम लोगों को ट्रेड कहां पे करना था? If we just work on the price action also, एक छोटा सा डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ where we could have expected market to go upside. ठीक है, तो let's say we are going for the trade at any of these points, market started reverting. ठीक है, तो एक तो if we see the overall trend of the market was still a downtrend. Overall trend जो था 15 minutes में, if you see, it is still in the downtrend movement. So we could have avoided for the market to go towards upside, because max to max what we could have expected up to this point, or max to max this point of time. So if it is not forming a good risk reward ratio, ठीक है, let's say breakout आ गया, this is the point, and we had to keep up a stop loss at this level. Somewhere here we have to keep the target 1:1.5. I will not go for the trade. So because of the risk reward ratio, if it is not forming good, I can avoid the trade easily. ठीक है, मैं avoid करूंगा trading करना, क्योंकि अगर risk reward ratio अच्छा form नहीं हो रहा है, then there is no point of going for it. Again, if you see, overall trend was in 15 minutes, it is still in the downtrend. Clear indication for the selling side. ठीक है, मतलब market नीचे जाएगा. What we could have done it, stop loss, छोटा सा stop loss. This is the way we could have gone for it. And ज्यादा बड़ा target भी नहीं, ठीक है, but if we can take it up to this point of time also, like till here 1:3 भी मिल जाता, it's more than, it's like 165 points we are capturing. Though if you see, it has given a maximum of 1:6 it has given, but हाँ 1:3 मिल गया ना, काफी है, because when the market went in range, we had to exit. This was an unexpected movement which came approximated 250 points. ठीक है, last 10 मिनट में जो ये movement आया. तो लेट्स सी कि कल के दिन कैसे ट्रेडिंग करेंगे. ठीक है, सेम यहां पे जिस पॉइंट ऑफ, इफ यू विल गो विद द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, मार्केट वेंट अप्रोक्सीमेटली टिल दिस लेवल. लेट मी रिमूव दिस. मार्केट यहां तक ऑलमोस्ट आया, ठीक है, एंड देन इट केम डाउन वंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड वंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, so if we see, it is forming a double bottom pattern. Not really a double bottom pattern or an inverted head and shoulder pattern, but what we can see that, ठीक है, एक trend line definitely it is forming. You can take it up to here or here as well. तो अभी यहाँ पे how can, because whatever the plan we had for this Bank Nifty, completely it was just went wrong, or it didn't work out actually, it didn't go wrong. ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या है, we need to see carefully. आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो एक हमारा रिजेक्शन लेवल, अगर इंट्राडे की बात करें तो एक छोटा सा रिजेक्शन लेवल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा है. इन 15 मिनट्स इफ यू कैन सी, दिस इज द पॉइंट 36,700 के आसपास आ रहा है. दिस इज बिकॉज ऑफ टुडेस. और एक ये हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया हुआ है.
अब इसमें ट्रेड कैसे करना, इफ इट इज गिविंग अस अ ब्रेकआउट देन वी कैन गो फॉर बाइंग साइड, ठीक है, मतलब अप ट्रेंड के लिए जो भी है आपका कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सेल करने का वो देख सकते हो। दूसरा, if it is breaking this level then we can go for the selling side, but the only condition for this will be if market is reverting you should avoid trading, ठीक है। अगर यहां से मार्केट, क्योंकि बार बार यहाँ पे देखोगे कि अच्छा खासा रिजेक्शन मिल रहा है, इन केस अगर कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है और कभी भी इस लेवल को क्रॉस करता है, ऑलमोस्ट 300 डाउनसाइड है, ठीक है, तब एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज यू कैन गेट। सो इफ इट इज हैपनिंग लाइक दिस, तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल विल बी हैविंग एट 36,200 के अप्रोक्सीमेट में रहेगा एक अच्छा सपोर्ट लेवल। अगर इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद छोटा सा पुल बैक वी कैन गो फॉर द सेलिंग साइड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन इफ मार्केट इज रिवर्टिंग फ्रॉम हियर वी कैन लुक फॉर बाइंग। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज कि इफ आई एम टेलिंग यू बाइंग दैट मींस कि हाँ अप ट्रेंड के लिए है ये चीज, आप कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो या फिर पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगर इन ए केस इफ दिस लेवल इज ब्रोकन, चांसेस देखते हैं कल कैसा मार्केट ओपन होता है, द ग्लोबल मार्केट एंड एवरीथिंग। इफ दिस लेवल इज ब्रोकन और पर्टिकुलरली दिस लेवल, वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये गैप जो हुआ है दिस हैज टू गेट कवर्ड, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो, ठीक है। सो बाइंग के लिए अगर फ्लैट ओपन होता है ना, if the market is opening flat, let's say in 5 minutes time frame, in bank nifty we do not have a proper trend एक form नहीं हो रहा है, if you can see that we have to make it like this, एक proper trend form नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा बच के इसमें selling के लिए if we have to go for it, my conviction कि हाँ यहाँ पे I'll start hedging if I have to take up the trade, ठीक है, I'll start hedging up this at this point of time, फिर उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है देन आई कैन एडजस्ट माय पोजीशन अकॉर्डिंगली। तो सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फॉर्म हो सकता है पुट ऑप्शन बाय करने का। बाइंग के लिए इफ दिस लेवल इज ब्रोकन 36,800 और जो आज का ये लेवल है 36,900 यू कैन कंसिडर, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो कुछ 150 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। बट हाँ अगर मार्केट सस्टेन कर गया, इफ इट इज सस्टेनिंग अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स, वी कैन सी कि हाँ दिस लेवल कैन गिव अस अ ब्रेकआउट, ठीक है। बट थोड़ा सा अपसाइड के लिए एक बड़ा मूवमेंट है, तो वी नीड टू सी कि हाउ मार्केट इज ओपनिंग टुमारो, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 पर्टिकुलरली एनालिसिस, ठीक है।